अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोइज़ रहमान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त एक फ्लरी ऑफ आईपीओज हैं, कुछ हो चुके हैं और आगे कुछ होने वाले हैं। वन ऑफ द आईपीओज दैट आर सपोज टू हैपन इज़ ऑफ सितारा पेट्रोलियम लिमिटेड, और इसी वजह से हमने आज शो में दावत दी है ज़हीर बेग साहब को, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सितारा पेट्रोलियम लिमिटेड। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। सर, कुड यू टेल अस अबाउट योर कंपनी, और उसके बारे में अगर आप ये भी बता सकें कि अब आईपीओ की इस वक्त ज़रूरत क्यों पेश आई, और आप किस तरह समझते हैं कि यह आईपीओ आपकी जर्नी को एक्सेलरेट कर सकता है इनटू बेसिकली फुल स्केल ओएमसी आगे जाते हुए। थैंक यू सो मच मोइज साहब। हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आई मीन दिस ग्रुप इज़ देयर इन द पेट्रोलियम बिजनेस फॉर द लास्ट 50 years. And then, they are fuel management company, they are into transport. I mean, this tank lorries, also carriage contractors, they are famous. And then they grew their business through their credibility, because if you see you are giving the right quantity, right quality of the products, you build your credibility. So over the years, they build the credibility, and they were growing very fast. And then when they were growing very fast, they wanted to have it even more and more, sort of professionalism and system-driven company from individual-driven company. So recently, with the going with Aramco, we are their key logistic partner. Majority of their product is transported by us, and also we run our about 61 gas stations. So we are a very interesting company, probably largest fuel management company in Pakistan. So I mean, we were consolidating ourselves, and now since we are further growing, so we thought, let us, public also participate in our growth, and we enjoy as a bigger team. Absolutely. Because अभी आपने जैसे you talked about कि आप यू आर द लार्जेस्ट, आपका गो पेट्रोलियम के साथ एक आपका आई थिंक योर लॉजिस्टिक्स फ्लीट इज़ हेविली टाइड टू गो पेट्रोलियम, और जिस तरह गो का जो मार्केट शेयर है वो ग्रो कर रहा है, तो आपकी रिलायंस भी ऑब्वियसली इस पर ग्रो कर रही है। तो अगर आप हमें बता सकें कि जो आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान है, हाउ डू यू प्लान टू एक्चुअली सस्टेन विद रिगार्ड्स टू इट वाइल बीइंग टाइड so closely to one single major contract, जिस तरह गो पेट्रोलियम की अभी आपने बात की? Yeah, because it is multiple things. If you see, we are not only logistic, but we also managing go sites also, 61 sites. So we are very close netted partner in the success of Go. बिल्कुल. And since now when Go and Aramco are coming together, they are together, so their growth ambitions are very high. And we are linking that, I mean, there is a linkage with this even IPO, that we want to add some tank lorries also, so that, we serve our customer the best way, which is Go Aramco. बिल्कुल. जो आपकी जो इस वक्त एक ग्रोथ रही है फ्रॉम जो एक लास्ट ईयर के अगर हम फिगर्स निकालें, तो गोइंग फॉरवर्ड आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो ग्रोथ एक इवेंट था, वाज इट अ वन टाइम इवेंट, या आप इसको सस्टेनेबली किस तरह मैनेज करने का आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? We are making it sustainable, because we are focusing in every aspect from where we can generate income. For example, we have hired a very specialist in NFR, non-fuel revenue. So we are upgrading our shops, convenience stores at the retail outlet, so that there is more and more, customers coming in, and they not only buying stuff from the shop, but also they are fueling their vehicle also. So we are very much there. बिल्कुल. अभी आपने जैसे बताया कि 61 साइट्स पे यू आर करंटली ऑपरेटिंग, और अगर जैसे जो इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टस है उसमें जो बताया गया कि आगे तकरीबन 47 साइट्स जो पेट्रोलियम पंप्स जो है वो आपने जून 2027 तक ऐड करने, अगर आप बता सकें इन पे इस वक्त क्या प्रोग्रेस अभी तक है? Moiz, I mean, we have our own retail development team, and we have professionals, I mean, who, for example, retail head is from IBA, and he did work in the largest oil marketing company and 2 other companies. So we have scanned already 100 sites, potential sites. And even yesterday I visited a site at the Lee market over here. So we have been, scanning potential locations, so that which site suits to us,
And out of that, there are 12 sites. The process is that those are under process already. So this is a continuous process of retail development. I think financial risks भी associated हैं. आपके जो plans हैं वो काफ़ी 100 sites का plan है. तो how do you expect कि जो इसका जो एक financial risk involved है उसको आप किस तरह address करना चाहेंगे? उसमें मोइज हमारा चूँकि we are the fuel station management company and also we are logistic company. I mean, तो we have least risk because the dealer's margin अभी जो बात हुई even is going to. I was working in a largest oil marketing company where the dealer's margin was 1 rupees and 20 paisa. So over the years it has gone 8 times. Okay. So definitely even government is understanding that to run the business you need to they are increasing time to time that one. And the other one, since we are linked with Go and Aramco's aggressive growth, so we have least risk in that terms. But definitely, since we do a lot of B2B business, corporate business, for example, we are the supplier of fuel to Daewoo. So carrying cost, if the prices go very high, so then we can, need some more money. And for that, we have unutilized, even lines from the different banks. So we can adjust. अभी आपने जैसे जिक्र किया कि मतलब आप इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, लॉजिस्टिक्स में भी हैं, लार्जेस्ट फ्यूल मार्केटिंग कंपनी है. नाउ देयर इज अ ग्रोथ प्लान टूवर्ड्स OMC. तो एक राइजिंग क्वेश्चन कुछ सर्कल्स में ये भी है कि कीपिंग इन व्यू के आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग मॉडल्स हैं, तो उनमें आप किस तरह रहते हुए सस्टेन करना चाहते हैं, एंड इन पर्टिकुलर कि आप किस तरह अपने आप को मैनेज करेंगे while being a dealership as well as an OMC going forward? Well, I mean, currently, if you see our near, future objectives and the numbers also, projected numbers, we want to consolidate ourselves toward this tank lorries, logistic business, as well as increasing our retail network, which will be branded by Go and Aramco. And then this storage one, because there is a place, we have a land in Gatti, and Gatti is the area where there is a gap. And over here also there are so many big, storage houses which are renting out their storage to different oil marketing companies. Even one oil marketing company gives the hospitality to the others at different locations. So our current model is enough to give us a good profit even in near term if we don't have the OMC. अब अगर हम आगे जाते हुए बात करें, आपने जैसे बताया कि जो अगर प्रोस्पेक्टस में भी जाएं तो उसमें लिखा है कि जो आपके IPO के प्रोसीड्स होंगे 4.8 बिलियन रुपीस के होंगे, जिसका 58% हैज़ टू गो टूवर्ड्स योर स्टोरेज कैपेसिटी. तो इसका रैशनल क्या है बिहाइंड ऑल ऑफ दिस के 58% बीइंग इन्वेस्टेड ऑन द स्टोरेज कैपेसिटी, एंड हाउ डू यू प्लान टू यूज़ जो IPO के दीगर प्रोसीड्स हैं ऑन योर बिजनेस? उसमें I think this is the right sort of question which you asked about the major portion going into storage, because as I said, there is a gap. There is opportunity for us to give that, utilize that storage on rental, and the payback is also in 4 years' time. So this is a still very profitable business for us. अब अगर हम आते हैं वैल्यूएशन के बारे में, तो अगर हम सितारा पेट्रोलियम का जो फ्लोर पी रेशो देखें, वो तकरीबन दैट इज़ समवेयर अराउंड 3.96, जो कि तकरीबन अगर बाकी इंडस्ट्री को देखा जाए उससे 50% का डिस्काउंट है. ये बहुत स्टीप डिस्काउंट है. अगर हम इसको करंट जो कराची स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स के मल्टीपल्स के बारे में देखें तो उसकी क्या वजह? आर यू प्राइसिंग फॉर अ रिस्क, या बेसिकली यू आर लीविंग मनी ऑन द टेबल फॉर योर रिटेल इन्वेस्टर्स? No, I mean, this is our first IPO for the group. I mean, and also interestingly, our recent performance is even better than the planned one. So one of the reason for, it looks even less, although it was definitely much more discounted one. At the same time, our recent performance has gone better,
And we are still happy that, you know, at least our, you know, those investors will also make money out of it. अब अगर हम कुछ इंडस्ट्री के तरफ आ जाएं एंड जो इंडस्ट्री को लेके जो एक बड़ी जो आजकल एक मामला आ रहा है कि देयर इज़ अ डिजिटाइजेशन स्टैंड ऑफ, तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली डीलरशिप मार्जिन्स भी इंक्रीज़ किए थे, ओएमसी मार्जिन्स भी इंक्रीज़ किए थे, बट गवर्नमेंट ने टाई अप कर दिया इनको डिजिटाइजेशन को लेके। तो हाउ डू यू प्लान टू, इस स्पेस में क्या डेवलपमेंट हो रही है और इंडस्ट्री को लेके क्या आगे प्रोग्रेस है? I think, Moiz, I mean, future may, if we see, definitely digitization is going to help to the industry also, and it is going to, even for the government, you know, for the policy making, it is going to, you know, those numbers are going to, you know, sort of facilitate everyone to do better, and government has already planned to raise even the, as you rightly said, the distribution margin. And that will translate even a bigger profit for us because we are fuel station management company. So dealer margin will be increased. Absolutely. अब जैसे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे नज़र डाली जाए तो बड़े हैवी फ्लक्चुएशंस रहे हैं इन लाइट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग जियोपॉलिटिकली। तो इस वक्त आपके क्या सेफगार्ड्स हैं लेके, जो इन्वेंट्री लॉसेस को लेके आपके क्या इस वक्त सेफगार्ड्स हैं? उसमें ये since we are fuel station management company, and we have our inventory from 3 days to 8 days. So we definitely don't want to run our site dry. We want that every customer who enters to our fuel station gets fuel. Okay, but at the same time, we definitely can manage the inventory level in a decent way, so that we don't get, you know, those losses. If you're OMC, definitely it is more sort of chances that you go into that fluctuation. अब अगर हम दोबारा सितारा पेट्रोलियम के बिजनेस मॉडल पे बात करें तो ऑलरेडी काफ़ी डिफरेंट मोड्स हैं ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस। एक अब रीसेंट इन्वेस्टमेंट आई है इन द ईवी स्पेस एज वेल, जो कि अब काफ़ी जो आपकी ऑटोमोबाइल स्पेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा एडिशंस आ रहे हैं। तो अभी आपने गीली जो कंपनी उसको आपने 610 मिलियन रुपीज़ आपने कमिट किए हैं। इज़ दिस अ स्ट्रेटेजिक हेज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल पेट्रोलियम मैकेनिज्म, या फिर ये आपके जो कोर जो बिजनेस है उससे एक डिस्ट्रैक्शन है? नहीं, उसमें आई मीन ओवरऑल इन द एनर्जी सेक्टर जो है, और बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ईवी आ जाएगा तो आपका क्या बनेगा, यू नो, फ्यूल बिजनेस का। तो मेरा अपना व्यू ये होता है मोइज साहब कि जब भी चेंज आती है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है और उसके साथ चलना है, उसके साथ एडजस्ट करके। और इसमें एक ऑल्दो स्टडीज़ हुई हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म, मतलब जाके काफ़ी देर के बाद में भी 2040 ऑनवर्ड कुछ आपको सिग्निफिकेंट चेंज नज़र आएगी, बट अभी 10-15 साल में कोई ख़ास नहीं चेंज आने वाली। बट इवन देन वी आर टेकिंग दैट चेंज, और इसमें हमने 600 मिलियन डेफिनेटली किया है, एंड अदर वी हैव कमिटेड टोटल 1.5 बिलियन इन आवर 5 years बिजनेस प्लान, और कैप है उस पर। इसमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, द ग्रुप विच ये कैपिटल स्मार्ट मोटर्स, उनकी एक प्रोडक्ट आ रही है विच टू मी लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी 1000 cc लेवल की गाड़ी के इक्विवेलेंट इफ़ यू गेट in 5 million rupees, you know, EV, that's going to be a game changer. Plus हमने डाइवर्सिफाई भी उस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है कि हाई एंड भी है, मिड एंड भी है और लो एंड भी है प्रोडक्ट्स। सो आई मीन दिस इज़ ए क्वाइट इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो। अब इसका एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वही है कि ऑन वन साइड देयर इज एन एक्सपेंशन टू मोर देन 100 sites in terms of the petroleum supply, फिर एक साइड पे काफ़ी आपकी हेफ्टी इन्वेस्टमेंट है, 610 मिलियन इस फेज़ में एंड 1.5 बिलियन आगे जाके। तो ये किस तरह बैलेंस आप इसको फिट इन करेंगे, या आगे जाके इन्हीं पेट्रोलियम साइट्स को कुछ जो है कन्वर्ट करेंगे इनटू चार्जिंग स्टेशंस या कुछ? देखिए, हमारा गोल तो ये है कि इवन गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि नाउ एवरी स्टेशन नीड टू हैव चार्जिंग स्टेशन, बट वो ना भी होता तो हम ऑलरेडी प्लान थे कि हम अपने की स्टेशंस पे वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। और इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ भी गई हैं जिन्होंने विद नो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर साइड
they are offering on profit sharing, that they can install, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग मॉडल आ भी गए हैं इसमें. और फ्यूचर में हम तो ये भी प्लान कर रहे हैं कि मे बी इन कराची, लाहौर, हम नियर इन फ्यूचर एक रिकवरी व्हीकल्स भी हो, so that when your car is stuck, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो, and then in 10 minutes that is 30% discharge and you go to your office and you go to your home. So I mean we are already taking these initiatives. बिल्कुल. आपकी जो इंडस्ट्री है, और जो आपकी स्पेशली जो एक फ्यूल इंडस्ट्री है पेट्रोलियम की, बहुत हाई कंपटीशन है. गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट इज़ योर विजन, या व्हाट हैव यू प्लान्ड आउट के आगे जाके आप मार्केट शेयर भी कैप्चर करेंगे वाइल इंश्योरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एट द सेम टाइम? मोइज़, हमने एक बहुत पहले एक स्टडी करवाई फ्रॉम अ बिजनेस स्कूल, और उसमें ये था कि व्हाट अ कस्टमर लुक्स इनटू वाइल फ्यूलिंग द कार. तो 2-3 चीज़ें बहुत ही प्रोमिनेंट आई थी. वन वाज कि आप कितनी ईजीली घर से निकल के या ऑफिस से निकल के यू कैन एंटर टू द फ्यूल स्टेशन, सो योर एक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन वहाँ का आपको क्वालिटी क्वांटिटी कैसे मिलती है, कस्टमर सर्विस क्या है, एंड देन और जिस तरह ये कन्वीनियंस स्टोर है और फैसिलिटीज़ कितनी हैं कि यू वुड लव टू बी देयर. तो वी आर फोकसिंग इन ऑल दोज 3-4 मैटर्स. अभी हमने पिछले दिनों लाहौर कसूर रोड पे एक इनाग्रेट की है साइट विच इज़ द लार्जेस्ट कन्वीनियंस स्टोर. उसमें हमने शेड्स भी गाड़ियों के लिए रख दिए ताकि इट इज़ ए 400 feet front station. So you are creating a wow experience for the customer. So you have to differentiate, irrespective of the competition. If you're doing something great and different than the others, in a positive way, you achieve your results. बिल्कुल. अगर हम अब एक ओवरऑल इंडस्ट्री को देखें एट द मोमेंट, इफ़ यू कुड टॉक अबाउट व्हाट मेजर challenges is the industry going through at the moment? अब आगे बजट भी आ रहा है, तो if you have any suggestions कि क्या इसमें इंडस्ट्री के लिए क्या I think for the industry, I mean definitely the price volatility, the price, and then the carrying cost. I mean, for example, if you need to have the inventory, you need to have. So उसमें maybe, I mean, if there is, and the price fluctuation determination weekly or bi-weekly, तो उसमें maybe there is some sort of I mean एक consistent ऐसी चीज़ हो जो कि price related, for example dealers margin हो जाए, so that dealers are happy. या OMC का भी उसी तरह कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाए, and then we can minimize the impact on both dealers as well as OMC on the price fluctuation and availability of that the same way. अब अगर हम बिल्कुल एंडिंग की तरफ एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो IPO सब्सक्रिप्शन ओपन्स ऑन द 11th of May फॉर द पब्लिक, जो आपका रिटेल इन्वेस्टर इन द PSX, in one sentence if I were to ask you, what message do you have for them? I would definitely say to अपने सब investors को कि let us earn joining us, because we have already established that हमने अपनी planned profitability से भी we have exceeded. हमारे revenue भी exceed हुए हैं 120 billion rupees से 150 billion, and then also profit from 3.2 billion to we are crossing 5 billion. So let us join hand in this great success. Thank you for being with us today. You're most welcome. Thank you so much, Moiz.